हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहिबा। सोनम साहिबा, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me again. थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर स्पेयरिंग टाइम। बड़े दिन हुए आपसे बात नहीं हुई। मैंने कहा आज ज़रा, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो आई जस्ट वांटेड टू गेट एन इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर, हाउ इंडिया इज़ लुकिंग थिंग्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो व्हाट वी हैव सीन कि देयर इज़ द राइज ऑफ टेररिज्म, रिसर्जेंस हो रही है। तो और पाकिस्तान जो है वो भी दहशतगर्दी से लड़ रहा है। इंडिया अपनी तरफ से कह रहा है कि वो भी लड़ रहा है। पूरी दुनिया लड़ रही है, ये नहीं कि कोई एक मुल्क नहीं लड़ रहा, सब लड़ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान? डू यू थिंक कि इसमें, बिकॉज यू हैव बीन लुकिंग अफगानिस्तान एज वेल, आप क्या समझती हैं कि अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना वाज अ मिस्टेक? आप समझती हैं कि इस तरह निकलना गलती थी जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी बढ़ी है? बिकॉज द अफगान तालिबान हैव नॉट बीन एबल टू होल्ड, और दे आर स्टिल हैविंग, दे आर कंट्रोलिंग सम मिलिटेंट ग्रुप्स। वो वैसे तो वो खुद भी मिलिटेंट नहीं है अभी तक, उनको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। लेकिन आप समझते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स का वहाँ से निकल जाना, एम्बेसीज बंद हो जाना, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ी। हाउ डू यू सी दिस? Well, in India, we always had this understanding that supporting terror groups is not going to help any nation, be it Pakistan or any nation for that matter. Not that we could foretell, but we certainly could see to an extent that, once America or NATO is out of Afghanistan, things are not going to be as Pakistan is expecting things to turn out to be. टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर आप अच्छा सॉरी आप मुझे कहने वाले थे शायद उर्दू या हिंदी में बात करें, यस राइट? मैडम, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हम सब की वैसी इंग्लिश नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे हिंदी या उर्दू में बात करें, प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ट्राई करूँगी। थोड़ा-थोड़ा बीच में स्विच करूँगी, प्लीज़ एडजस्ट मारी, ठीक है? तो जी, ये हम तो हमेशा से इंडिया में कहते आ रहे हैं कि द वे यूएस एग्जिटेड अफ़गानिस्तान वाज़ टेरिबल टू से द लीस्ट। जिस तरह से उनको लास्ट डे में जिस तरह से उनको मारा मारी में वहां से निकलना पड़ा, दिस इज नॉट हाउ यूएस हैड प्लान्ड it in the first place, right? But I think Pakistanis or Pakistan as a state doesn't have the merit to comment on that, because पाकिस्तान में एक खुशी का माहौल था जब तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान। फिर पाकिस्तान के लिए एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस भी कुछ लोगों ने ढूंढ लिया था कि अरे ये 15 अगस्त के दिन हुआ है तो हम पता नहीं हमारी आईएसआई ने कितना बड़ा तीर मार लिया है। तो फॉर अस वी ऑलवेज न्यू कि ये एक डिजास्टर होगा पाकिस्तान के लिए भी, इस रीजन के लिए भी, और उन ताकतों के लिए भी जो जिन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा जो है टाइम स्पेंड किया अफगानिस्तान में, इतना पैसा लगाया, बट इवेंचुअली व्हेन दे वर एग्जिटिंग दे pretty much defeated the whole purpose of being in Afghanistan in the first place. अमेरिका का अफगानिस्तान में आना, जो उनका जो stated position है वो ये है कि they wanted to break the back of Al Qaeda and other terror groups which could have global ambition. आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो ISKP है वो भी अब सर उठा रहा है। अब वहाँ पे जो अलकायदा के जो फाइटर्स थे वो भी अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं रीऑर्गेनाइज होने की, और उन्होंने अपना एक इंडिया का भी एक फैक्शन अपना एक उन्होंने तैयार कर लिया है। तो द होल पर्पस ऑफ नेटो कमिंग टू अफगानिस्तान प्रीटी मच गॉट डिफीटेड the way they concluded, their exit. But आई थिंक सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की है अफगानिस्तान को समझने में, तो वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान ने की है, वो अमेरिका ने नहीं की, वो और किसी प्लेयर ने नहीं की। बिकॉज आप दुनिया को बताते रहे ये बात कि भाई आप जो है अफगानिस्तान में आप अफगान्स को हरा नहीं सकते। दीज पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉरियर स्पिरिट। बट आपने खुद कहीं ना कहीं ये समझने में गलती कर दी कि अगर उन्होंने किसी और मुल्क की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की तो वो पाकिस्तान की भी इंटरफेरेंस जो है वो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करेंगे। आप उनका बिग ब्रदर प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपने तालिबान को
सब कुछ आप ही ने सिखाया, किस तरह से अपने आप को मार्केट करना है, किस तरह से अपनी पीआर करनी है, किस तरह से दुनिया में घूमना है, एंड यू हैव टू सेल योरसेल्फ. In fact, Pakistanis were the ones who were telling the whole world, look, this is Taliban 2.0. You know, they have broken the shackles of slavery, and please recognize them. Please give them money, otherwise it will be a problem for the region. तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू फर्स्ट एंड देन द रीजन. तो सही कह रही हैं, मेरा ख्याल है कई दफ़ा बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो जिन बच्चों के ऊपर हाथ रखा होता है, वो जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो वो फिर अपनी फ़्लाइट खुद लेते हैं। मेरा ख्याल है अफ़गान तालिबान भी उसी कैटेगरी में आए हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू लुक इनवर्ड, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ इंडियाज़ डिज़ाइन फॉर अफ़गानिस्तान? फॉर इंस्टेंस, India is working with all Central Asian countries and particularly with Russia as well. Recently, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक एनएसएस की मीटिंग भी बुलाई थी, इरानियंस भी वहाँ पे थे। डू यू थिंक इंडिया हैज़ अ प्लान फॉर अफगानिस्तान? वन थिंग। और क्या इंडिया के पास कोई अफगानिस्तान के लिए प्लान है, या इंडिया इज जस्ट ट्राइंग टू बी डिफेंसिव होना चाह रहा है, और या अपनी एक शील्ड बस रखना चाह रहा है आगे, कि वेन एवर देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान, वी हैव एन इनपुट, इंडिया का इनपुट हो? क्योंकि पिछले जो अशरफ गनी हो या बाकी लोग जो थे, तो इंडिया का एक अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग इनपुट था, or that was recognized by the international community as well and by the Afghans as well. So, what kind of an role India look in Afghanistan आइंदा आने वाले दिनों में? What is your understanding on that, please? I think for now, India will focus more on the defensive bit of it. बिकॉज हमारी एक पॉलिसी बहुत ही क्लियर है. कोई टेरर ग्रुप अगर हमारे मतलब इंडियन नैरेटिव को टाइम बीइंग के लिए फेवर भी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द टीटीपी, दे आर नॉट अपोज टू इंडिया इन एनी वे, राइट? इनफैक्ट उनके जितने भी उनके मोटिव्स हैं, दे आर ऑल अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. बट हमारी एक पॉलिसी बहुत ही क्लियर है दैट वी डू नॉट ट्रस्ट terror groups, because they can like swing in any way, and you have learned that in the hard way by now, right? तो for now our policy, जैसे ही जब आई रिमेंबर जब हमारी जब तालिबान टुक ओवर काबुल, तब भी मेरी आपकी एक डिस्कशन हुई थी, तब भी मैंने आपको कहा था कि इंडियाज पॉलिसी विल बी मोर ऑफ लाइक waiting and watching and making sure that the Afghan territory primarily is not used for any kind of anti-India activities. We have received reports कि recently, in the recent months, बहुत सारे जो एंटाई इंडिया टेरर ग्रुप्स हैं which were based in Pakistan, they are slowly shifting their base to Afghanistan. So we are wary of that. But then जितना ये चीज़ इंडिया को कंसर्न कर रही है, आई थिंक दुनिया भर में अगर आप देखें, इवन जो टीडीपी की रिसर्जेंस है उसकी वजह से भी इट हैज़ गॉट द होल वर्ल्ड कंसर्न्ड इन अ वे, बिकॉज सबकी अपनी पहली बारी ये है कि जी अफगान टेरिटरी जो है वो हमारी कंट्री में कुछ दहशतगर्दी के हमले कराने के लिए या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी के लिए यूज़ ना हो. उसका प्राइमरी रीज़न तो भाई ये है कि वहाँ पे जो गवर्निंग पावर अभी है, जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अफगानिस्तान में राइट नाउ, आई मीन इट्स अ टेरर ग्रुप. It has multiple factions. There are moderate people within Taliban who probably understand a bit of PR, marketing, and diplomacy, but largely it is not a group that you can trust. And of all of us, Pakistanis will be able to tell that the most, because हो सकता है कि आपकी जो अफगान तालिबान के बीच में और आपकी जो हुकूमत है उनके बीच में भी एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम एक दूसरे को अटैक ना करें. बट जो एक तालिबान फाइटर जो चमन क्रॉसिंग पे खड़ा होगा, he is not necessarily going to take all the dictats from the higher ups, right? Because they have a brain of their own. आप उनको थोड़ा सा छेड़ेंगे, they will go nuts. And they understand the language of gun and they speak the language of gun. So for us, it's primarily going to be right now making sure that our people in Afghanistan are safe, our diplomatic officials, because many important embassies have been attacked in Afghanistan lately. And of course, we did have business interests, but I think जैसे ही वो Taliban took over, those interests took a backseat, because we have a good understanding of the fact that it's not easy to do business with terror groups, and they are not they don't have a very, what do you say,
टॉप डाउन अप्रोच कि आपने टॉप पे बात कर ली और फिर वो आपने जितने इनके नीचे जंगजू हैं उन्होंने उनको समझा दिया कि जी ऐसे ऐसे करना है. यू डोंट नो हाउ टू डील विद दीज गाइज, राइट? So we are primarily looking at our interest of national security, that Afghanistan में जो भी entire India groups भी जो जिनकी movements वहाँ पे हुई हैं, to keep a close watch on them also and see if we could collaborate with other players to tackle that threat on time. अच्छा आपने बात की कोई इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, आर देयर एनी इंडियन डिप्लोमेट्स इन अफगानिस्तान येट? Of course, there are the Indian, as far as I know, I mean, the reports that I've read, of course, there are Indian diplomatic officials currently in Afghanistan. And in fact, the Taliban recently even had a meeting with them. I mean, Taliban forever have been trying to engage with India and telling them कि आप जो वो उन्होंने officials से हमारे officials से recently उन्होंने meeting करके कहा है कि जी आप जो आपके projects हैं आप उनको complete करें and we will provide you security and all of that. I mean, there've been engagements recently. नहीं वैसी तो बात है, तो डिप्लोमेट वहाँ पे क्या कर रहे हैं, या फिर आप समझती हैं कि वो जो हैं दे आर जस्ट Who told you the embassy is बंद वहाँ पे? नहीं, आपके तो सारे इवैक्यूएट कर लिए थे सब कुछ वहाँ से. Yeah, but it resumed, right? अच्छा. It's been all over the media forever now. नहीं नहीं, अच्छा मुझे तो था कि क्योंकि वो चले गए हैं सारे, तो हमें तो था कि इंडियंस, देयर You नो know, मोर इंडियंस. we वो do सिर्फ have बिजनेस के लोग रह गए हैं, जो कोई टेक्निकल लोग थे वहाँ पे, दे आर हेल्पिंग अफगान तालिबान फॉर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह के रिलेटेड वही थे. आई थिंक वी डिडंट हियर कि But I think इंडियन उस टाइम डिप्लोमेट्स. पे तो और भी कंट्रीज हैं उनके जो भी सफीर थे वो भी निकल गए थे. But right now everybody has some presence there, so it should not come to Pakistanis as a surprise कि why Indians are still there. I mean, you get over that, you know, नहीं नहीं, hysteria of yours. If Indians are there, something is going to happen here. You know, it is happening मैं any. मैं तो मैडम वैसी बात कर रहा हूँ, आप इतनी सीरियस इस पर वो नहीं है, मेरा मकसद वो नहीं था. मैं जस्ट दैट वाज अ क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज आई न्यू दैट देयर सम टेक्निकल पीपल, बट आई डिडंट नो दैट देयर सम डिप्लोमेट्स, बिकॉज आई पर्सनली फाइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस. बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड मैडम, आप कैसे समझती हैं कि इंडियन एंड तालिबान की जो डायलॉग डिस्कशन हुआ रिसेंटली, वो हुआ काउंटर टेररिज्म पे भी हुआ है. So India may be all ready to talk with the Afghan Taliban. Obviously एक हिस्ट्री रही है, और इंडिया जो है वो चाहता है कि जो अफ़गान तालिबान के साथ मिलके अल-कायदा वगैरह के साथ जो है वो लड़ा जाए, या उनसे जो ये इस्लामिक स्टेट से जो थ्रेट आ रहे हैं. सो व्हाई डज़न्ट इंडिया बिलीव कि हमें एक देयर शुड बी जॉइंट मैकेनिज़्म. अफ़गान तालिबान के साथ तो इंडिया जो है वो कई अरसे से उनके खिलाफ था, एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग उससे पहले नॉर्दर्न अलायंस, एंड देन द प्रीवियसली हामिद करज़ई एंड द अशरफ गनीज एंड ऑल दैट. अभी इंडिया अफगान तालिबान के साथ बात कर रहा है हाउ टू टैकल इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा, लेट्स से. But why not have a regional mechanism where India, Pakistan, Afghanistan, or even the Taliban have not been recognized by anyone, even not Pakistan ने भी recognize नहीं किया हुआ. Why not have a regional mechanism if we have to target these transnational terror networks? Right. Right. I have not come across any such report. This is news to me that India is talking to Taliban to tackle Al Qaeda threat. I know India has a channel with Taliban, but I am not sure if we have ever discussed, like, you know, joint mechanism with them to tackle terrorism. I don't think we are going to rely on terrorists to tackle terrorists. Talking about you saying that why is India not, जितना मुझे समझ में आया, आप बेसिकली कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों कॉपरेट नहीं करता जब यू नो अगर टेररिज्म Regional mechanism. Why India is talking with the Central Asian countries, with the Iranians and the others? Why not having, while sitting with the Afghan Taliban and Pakistan? Because Afghan Taliban भी कहते हैं that the major threat for them is Al Qaeda, okay, and Islamic State. That is same for Pakistan, same for India. So this is what I'm saying. जी जी आपको याद होगा जब इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी आफ्टर तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान ने मना कर दिया था. पाकिस्तान को लगा कि भाई इंडिया कौन होता है यहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड करने वाला. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएग्री विद योर क्वेश्चन. आई थिंक इट्स अ लोडेड स्टेटमेंट रादर.
because there is nothing for us to, there is no opportunity for us to grab in the first place. And आई थिंक पाकिस्तान के साथ टेररिज्म पे कॉपरेट करना थोड़ा सा आयरॉनिक भी होगा, बिकॉज वाइल पाकिस्तान हैज आल्सो बीन फाइटिंग टेररिज्म, पाकिस्तान हैज आल्सो बीन द एपिसेंटर ऑफ इट. So, a country where people call Osama bin Laden a martyr, and they call Taliban terrorists, freedom fighters who've broken the shackles of slavery. It's a bit difficult to collaborate with such a country to tackle terrorism, because अगर आपने उनको legitimize ही कर दिया, अभी अब आपको उल्टा पड़ गया है पाकिस्तान को, coming to your senses and realizing that okay, this group is a rogue group, and this is not how we should have dealt with them. वो एक अलग बात है. बट अदरवाइज मतलब हमें तो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन यही है कि इंडिया इज एन एनिमी नेशन, राइट? इट इज वेरी ओपनली सेड देयर, एंड आई एम श्योर in India also in certain corridors it is spoken about very openly. But even the Americans, जो आपके strategic partners रहे हैं for a long time, who've been uh, collaborating with you in their war, so-called war on terror, uh, even when it comes to them, even they have a trust deficit with Pakistanis, right? In fact, multiple US lawmakers in the recent past, they have spoken about probing Pakistan's role in what happened in Panjshir, and otherwise also what was Pakistan's role in basically giving a boost to the Taliban, training them. And जब बेनज़ीर भुट्टो का जब टाइम था, तब तो आपने लिटरली उनको वायरलेस कम्युनिकेशन और बेटर रोड्स एंड हर तरह की उनको आपने फैसिलिटी प्रोवाइड की. तो अगर आपके जो लॉन्ग टर्म एलाइज हैं वही पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं कि भाई आर दे फोज और दे आर फ्रेंड्स in our war on terror, are they on that side or this side? अगर वो लोग ही ये चीज को जज नहीं कर पा रहे हैं, तो I think it would be hard for a country like India, which has been a victim of terrorism emanating from deep within Pakistan, to trust Pakistan on collaborating on entire terror operations. But अगर आपके पास कोई ऐसा incident है जहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं that the Pakistanis have reached out to New Delhi, Islamabad has, or Rawalpindi has reached out to New Delhi saying कि okay, let's work on this together, and India has said no, we can certainly talk about it. But for now, I disagree with your assertion. I think it's a loaded statement. It doesn't have any merit. Yeah. मेरे ख्याल से पाकिस्तान has helped India as far as some intelligence is concerned, that there could be possibility of some threats. I think in Indian occupied Kashmir, one thing I remember still, पाकिस्तान ने इंडियन अथॉरिटीज़ को बताया था लॉन्ग अगो, मुझे अब एग्जैक्ट उसका नहीं पता वो कौन सी चीज़, लेकिन पाकिस्तान ने इंटेल शेयर की थी. और दूसरा जो है वो एज फार एज आई थिंक सार के मैकेनिज्म में लिखा हुआ है, और भी जो हमारे बायलैटरल वी हैव मिसट्रस्ट इन अफगानिस्तान. मुझे याद है वो जो अजीत डोभाल साहब ने एनएसएस की मीटिंग बुलाई थी, उसमें उस वक्त पाकिस्तान के एनएसए मोहित यूसुफ होते थे. उन्होंने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट दी थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि वी शुड हैव गॉन इन इंडिया टू लुक इनटू व्हाटएवर दे आर टॉकिंग. जस्ट डोंट एग्री व्हाटएवर दे सेड, ना एग्री करें आप उसे, लेकिन जाएं देखें क्या बात हो रही है, गिव योर पर्सपेक्टिव. फोरम खाली छोड़ना इज नॉट अ वाइज मूव. और ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी, बट उस वक्त मेरा ख्याल है कि and I agree simply with you on this Osama bin Laden thing जो इमरान खान ने किया. He said he is a martyr. He's not a martyr. He's a terrorist. वो एक दहशतगर्द है, उसकी जमात दहशतगर्द है. The Pakistani military and the people have been fighting against, और ये politicians जो हैं at times they have been confusing to win over some brownie points. Even Shah Mahmood Qureshi ignored the question that came from the Tolo News editor in Islamabad. Again हमने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी. There is no space for that. लेकिन obviously one should have a clarity on that. लेकिन the political class, they think it everything from an electoral perspective. The state and maybe others. Do you want to say something? Well, I think it's a little unfair to put everything in the political class. I don't know if you're aware, Amrullah Saleh, who was the NDS chief back then, up till I think 2010, एंड उन्होंने ये, अब ऐसा नहीं कि वो आज कह रहे हैं, अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज निकाल के देख लीजिए,
उन्होंने बहुत ही बार इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि ही हैड लाइक वर्ड विद परवेज मुशर्रफ बैक देन व्हेन ही वाज द आर्मी चीफ। उन्होंने उनको डोसियर्स दिए, उनको पूरा बताया कि भाई दिस इज वेयर लादेन इज प्रेजेंट राइट नाउ, ही इज प्रेजेंट राइट इनसाइड पाकिस्तान, ओके। सो आई मीन लेट्स गेट टुगेदर एंड गेट दिस गाय। एंड परवेज मुशर्रफ, अगर हम साले की जुबान में कहें तो वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे पे फाइलें गिरा दी और वो टेबल पे पटकने लग गए कि यू हु डू यू थिंक यू आर, आपको कैसे पता, एंड दिस इज नॉट ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि अब देखिए RNAW के और NDS के जो हैं आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इनफैक्ट यू नो these days in lot of power echelons in India and strategic circles it is being talked about कि we took everything from NDS, you know, when we were working together, but probably we should have done a little more for people like Amrullah Saleh. Probably we should have given him asylum. We have had long standing cooperation with the NDS, but आपने कहाँ पे cooperation की है terrorism पे? मुझे you know, when the Pakistani say we have fought a war on terrorism, I don't really understand what do they mean by that. You know, एक war on terrorism जो होती है उसकी फिर एक ही motivation होनी चाहिए कि हमें दहशतगर्दों से लड़ना है। उसमें आपके मल्टीपल फिर उसमें आपके एजेंडाज नहीं होने चाहिए कि भाई वी विल आल्सो ट्रेड आवर पीपल इन एक्सचेंज फॉर लाइक सम क्विक बक्स, and we will also find strategic depth in a country by alienating its people. That is not how it works. आप किसी एक नेशन को पूरा alienate करके, अगर आप बोलेंगे कि आप पूरे अफगान अवाम को एलियनेट करके आप तालिबान के साथ दोस्ती कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। कमर, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अफगानिस्तान में जो तालिबान है, द अफगान तालिबान, आई मीन दे आर ऑल्सो एथनिक Afghans, right? They are Pashtuns, you know, like primarily they are Pashtuns, ethnic Afghans, even though there are other ethnicities also. तो उनकी जो प्राइमरी जो लॉयल्टी होगी वो अफगानिस्तान के साथ ही होगी। अगर वहाँ की आवाम जो है एट लार्ज पाकिस्तान से नफरत करेगी तो अफगान तालिबान इवेंचुअली दे विल हैव टू टो दैट लाइन, राइट? एंड उन्होंने भी कभी भी आपकी जो ड्यूरन लाइन है उनकी भी वही पोजीशन रही है उसके ऊपर जो कि पुरानी अफगान गवर्नमेंट की थी, बट आपने उनको दुश्मन समझा, आपने उनके साथ कॉपरेट नहीं किया कभी भी। आपने सोचा ये जाएंगे और आपकी वो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, रीजनल स्पॉयलर्स एंड यू नो रॉ की साजिश और मुसाद की साजिश, वो आपको सब दिख गई कि वो किसी की कोई साजिश नहीं थी। यू नो इट वाज यू हु डिड नॉट हैव योर मूव्स कैलकुलेटेड। तो जो आपके बिल्कुल बगल में रहते थे, जो आपको इंटेलिजेंस शेयर करते रहे कि भाई यहाँ पे लादन बैठा हुआ है आपकी टेरिटरी के अंदर, उनके ऊपर आप फाइलें फेंकते रहे, उनके सामने आप टेबल पे मुक्के मारते रहे, तो फिर जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं वो पता नहीं आपके साथ कैसे कॉपरेट करे। जिन्होंने आपके साथ कॉपरेट किया वो खुद आज अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई डिड वी use these people or did we get used, or you know did we play them or did they play us? So I think it's a little difficult to trust a country like Pakistan with the kind of credentials it comes with. अच्छा, एक छोटा सा सवाल करिएगा, छोटे जवाब दीजिएगा। आप क्या समझती हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान का जो मेन एलाय था, क्या वो अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स थी या अफगानिस्तान था? ALI, यस। आई थिंक आप किसी के एलाई नहीं थे। यू यू जी 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 ओके, बोले आप। जी 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 मेरे मेरे ख्याल से आप किसी के भी एलाई नहीं थे इसमें, बिकॉज आपके खुद के जो फॉर्मर ISI चीफ थे जो हमीद गुल, वो रिकॉर्ड पे ये बात मान चुके हैं कि हम जो हैं अमरीकियों की मदद से ही अमरीकियों को यहाँ पे हराएंगे। एंड वो तब लोग बड़ा, सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक मैं है? आप मैं मेरी जरा एक छोटी सी, मैं दोबारा रिफ्रेम कर लेता हूँ सवाल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो क्या नाम है, उसने जन साहब ने ये कहा, वो एक नैरेटिव है। आई एम जी टॉकिंग अब हार्ड कोर कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, हर तरह की जो कोऑपरेशन है ऑन ग्राउंड, हर तरह राइट। पे हम अमरीकियों के करीब थे कि अफगानियों के करीब थे। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस फ्रॉम 2018, 2002-4 से आगे की मैं बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री तो बड़ी लंबी है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। मैं ये I was coming to that only. What I was trying to say is that you were basically for the hire. If somebody had paid you more than the Americans did, fortunately, there was nobody else who could pay as much as the Americans did, you would have supported that country also. That's what I'm trying to say. You were for the hire. You were not for, if you were with Afghans,
I mean, you would support a democratic government in Afghanistan. Your prime minister wouldn't sit and say कि भाई ये जो वहाँ पे तो अगर लड़कियों को तालीम नहीं लेने दे रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान, तो इसका ये तो उनका कल्चर ही है। भाई सेम ही लोग आपके केपीके में भी है ना, वहां पे अगर आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो हैं उनको तालीम मिले, तो फिर आप यू कैन नॉट चूज डिफरेंटली फॉर अफगानिस्तान। I don't think Pakistan as a state was with Afghanistan or with the Americans. You wanted a lot of money, and you, of course, also had your own problems in your tribal areas in that region of your country. So, you just went with the flow. I don't think you had any kind of agenda in mind or any particular outcome that you were looking at. अगर आपने किसी एक particular outcome को long term strategy के साथ pursue किया होता, you wouldn't be in a situation that you are in today. You went with the flow, एंड जहां पे आपको लगा कि यू टर्न मारना चाहिए, आपने जहां पे तालिबान को हड़काना था, आपने मुल्ला बिरादर को भी जेल में डाल दिया अपने इंटरेस्ट के लिए। फिर बाद में आपने उनको कतर में भी भेज दिया, उनको टेबल पे भी ले आए। आपके अपने Let's keep मकान में। this answer. I requested to keep this answer short because मैं आपको एक conclusion मैं I don't stop you whatever you say and मैं नो, आई मीन, there are no simple answers to this, ओके right? मैं There are no बताता हूँ मैं simple बताता हूँ answers, but yeah, मैं बता छोटी सी yeah. बात मैं बताने लगा था। देखिए पाकिस्तान के जो इत्तेहादी थे ना वो अमरुल्ला साले नहीं था। अमरुल्ला साले जो है हमें उसकी प्रोफाइल का भी पता है और उसका हमें बैकग्राउंड भी पता है और वो ये बातें क्यों कर रहा है वो भी पता है और उसके कहाँ कहाँ कनेक्शन हमें सारा पता है। वी नो अबाउट दी ऑब्वियसली दी तालिबान को भी जानते हैं हम, हज़ारास को भी जानते हैं, हम उज़्बेक को भी जानते हैं, हम ताजिक को भी जानते हैं। वी हैड ए कनेक्शन विद एवरीवन, वो एक अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान का जो मेन एलाय था दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देयर इज़ Right. नॉट वन सिंगल टर्म कि अमेरिका कहे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ाई की। दे हैव बीन सेइंग दिस एट पॉइंट्स व्हेन देयर इज़ अमरुल्ला साले coupled with some Indian perspective कि जी पाकिस्तान ने ये किया। अमरुल्ला साले की अपनी क्या वैलिडिटी है? What was Sure. he doing in fact? अमरुल्ला साले कौन है बेसिकली? उसकी वो who is he? Just a VP, वाइस प्रेसिडेंट? और वो क्या वो सारे सिस्टम में उसकी कुछ भी नहीं था वो। मैं जो आपको बता रहा हूँ अमेरिकन यूरोपियंस पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग हमारे साथ लड़ी एंड दे हैव सैक्रिफाइस एवरीवन। अभी सेंटकॉम चीफ आया हुआ थे सब कह के जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड इज द क्वेश्चन जो मुझे समझ आता है लेट्स प्रॉब्लमेटाइज कर लेना उसको। वो सिंपल सी बात है कि अफगान वो जो देयर इज सम सेगमेंट्स इन अफगानिस्तान वो क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। ठीक है ऑब्वियसली पाकिस्तान एट टाइम वांटेड अ फ्रेंडली अफगानिस्तान। ठीक है एक फ्रेंडली अफगानिस्तान हर मुल्क की ख्वाहिश होती है जैसे आप चाहते हैं कि फ्रेंडली नेपाल हो फ्रेंडली श्रीलंका हो। यू आर पेइंग द मनी आप उसको कहते हैं बांग्लादेश को कहते हैं ये चाइनीज जहाज यहाँ पे आके नहीं खड़ा होगा। सो यू वांट अ फ्रेंडली बांग्लादेश दैट इज यू नो दिस इज हाउ द नेशंस डू एंड यू वांट अ फ्रेंडली श्रीलंका दैट्स व्हाई यू आस्किंग कि यार ये जो चीज़ आ रही है इसको आपने ऐसे नहीं करने देना चाइनीज को हम आपको बताएंगे एंड यू आर पेइंग मनी। सो हर मुल्क Hmm. जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है वो करता है। सो वी वर आल्सो डूइंग दैट एंड वी हैव अ राइट टू डू दिस। ये जो अमरुल्ला साले लोग हैं ये जो बाकी ये जो बच्चे थे ये तो देवर नथिंग इन दिस गेम। इनको तो पता ही नहीं था कि चक्कर क्या है। Oh, पाकिस्तान right. वाज वर्किंग विद द अमेरिकन्स इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म वी वर देयर एलाय एंड दे न्यू 7,000 8,000 दस फौजी जवान शहीद हुआ सिविलियंस बाकी सारा। हमारी अपनी कुताहियां अपनी जगह आज भी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अपना। Right. आज भी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि क्यों टीटीपी से टॉक्स की क्यों उनको एक साल का मौका दिया वो रीग्रुप करें और दोबारा हम पे अटैक करें। सो Right. ये दीज आर सर्टन लेजिटिमेट क्वेश्चंस बट ये कह देना कि एंड द अमेरिकन्स हैव अ स्टेटमेंट ऑन अल-कायदा ऑन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी डिडंट नो ऑफ ओसामा बिन लादेन वहाँ पे नहीं उनको बिल्कुल पता नहीं था। दिस इज एन अमेरिकन स्टेटमेंट एंड Of अबव course. द स्टेट देखें रोग एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ नहीं होंगे। 5-10 बंदे Right. कहीं पे 2-4 बंदे ऑपरेट कर रहे हों ऑन देयर ओन किसी को क्या पता होता है इतना बड़ा ऑपरेटस चल रहा होता है। लेकिन मैं सिर्फ अगर अपनी फौज की एक चीज़ बताऊं देयर इज़ नॉट अ वन सिंगल इंसिडेंट कि चेन ऑफ कमांड टूटी हो किसी जूनियर ने Really? सीनियर को। Oh, यस किसी okay. जूनियर ने सीनियर को दरअसल आपकी स्टडी नहीं है ना पाकिस्तानी फौज की। अगर किसी Yeah, आप ही की जूनियर सारी study है. You want questions to be longer than answers. I don't know why मैं don't you just मैं have a monologue instead of having a guest? मैं दरअसल आई जस्ट वांटेड Organize टू a monologue for yourself when things go inconvenient. You shut the मैं guest up that you've called, right? I mean, मैं just organize मैं a monologue for yourself.
Why मैं do you even want to have a guest who has inconvenient answers for you? नहीं नहीं Your नहीं नहीं questions are generally longer than the guest's answers. Don't you read the feedback in the comment section? मुझे कमेंट सेक्शन की परवाह नहीं है. Sure. व्हाट आई एम सेइंग इज, जो मैं बात कर रहा था, मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब देते हैं. ये जो आपने बात की, मैं इसको आप एक कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहा था. अगर आप हाइपर होंगी तो मैं आपसे डबल हाइपर हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरी गेस्ट हैं. Sure, माय sure. जॉब इज, Go ahead, be my guest. Nothing लिसन better लिसन, is नहीं नहीं नहीं, expected of a pro-establishment Pakistani it's anyway. not about a pro establishment, it's about to be, it's You've about not having a, you've not learned your lessons. देखिए You have different things to say, देखिए, Kamal. डोंट टेल When you मी speak to a मुझे कैसे होना Pakistani, है. you आप have different things to say. When you speak to an Indian, you take a आपको U-turn. My मेरी friend, it's बात not सुने, going to help आपको you. आपको नहीं मुझे It's not going बताना to कि help you. मैंने And I wish जितना आपने अमरुल्लाह साले का ध्यान दिया ना, मैंने उतना आपने तो मुझे नहीं आपने बताना ना मैंने कैसे होना है. मैंने Kamar, but डिसाइड करना है मैंने कैसे होना है. सो Kamar, डोंट टेल मी, मैंने माय जॉब इज नॉट टू टेल यू कि आप कैसे हो. you don't माय agree जॉब with इज, me. You don't want to listen to my answers. Why do you invite me in the आई first नहीं place? Is my नहीं, question. आई हैव लिसनड योर आंसर, आई एम गिविंग Least you यू. can do is be respectful लिसन, to a guest. I am respectful to you. The only point is that if you will behave this way, that is not the way to be behaved. आप Oh, देखिए, you really? have been behaving aggressively. You This is are not the way. cutting me when I'm making I my have point always just to give respected me you. like I a don't. 6 minute answer, long question rather. एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए बात सुने. आई एम गिविंग यू ऑल द टाइम व्हाट यू आर टॉकिंग. आपका एक पर्सपेक्टिव है, एक मेरा पर्सपेक्टिव है. बट इफ Sure. यू विल से कि मैं अपनी मर्जी की बात ना करूं, मैं अब जस्ट आपको एक पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा हूं. अदरवाइज You are आप the जो मर्जी करते. interviewer. You are आई, the interviewer. Do you understand that? माय पर्सपेक्टिव इज कि आप Okay. जो कह रही है सारी Okay. Is बातें there ठीक नहीं anything कह else रही. we दैट need इज to सो talk सिंपल. about? आप क्यों Is there समझते anything हैं आपकी else we सारी need to बातें talk ठीक हैं? about? व्हाई डू यू थिंक आपकी सारी बातें ठीक है? आप क्यों Look, my समझती हैं? आप no. क्यों मेरे It's से not ऐसे that. बात कर रही है? मैं आपसे बड़े इंतहाई Oh इंतहाई my डिसेंट God. तरीके से It's सवाल not जवाब that. कर रहा हूँ, एंड It's आप not मुझसे ऐसे that. बात कर रही है जैसे मैं Let's आपको पता नहीं conclude क्या कर रहा this. हूँ. Let's conclude this. नहीं It's नहीं, not हम that. बिल्कुल कंक्लूड कर रहे हैं, बिल्कुल Sure. कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे मुझसे बात कर रही हैं जैसे मैं यहाँ पे कोई जो है वो आपको कोई सबसर्विएंट हूँ. आप मेरे लिए इंतहाई ऑनरेबल है. आपने एक सवाल किया, मैं उसको एक कॉन्टेक्स्ट बता Show रहा हूँ. that in your एंड action. रादर आप क्यों गुस्से में आ जाती है कि आपकी बात को Show काउंटर करे. that in your यू आर नॉट action. 100% करेक्ट मैडम. It नोबडी इज doesn't mean करेक्ट. anything मैं otherwise. अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा हूँ. मैं इमरान खान के, उसामा बिन लादेन के जो हक में बातें कर रहा हूँ, उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ. आपकी मैं गवर्नमेंट के शाह हाथ में कुरैशी है की कितना बात है कर कि रहा हूँ. आप भाई उनके आप खिलाफ तो बात करके भी आप what change can you bring about by even criticizing your मैडम politicians? मैडम They are मैंने, आप subservient मुझे to your कितना बताएं कि army. मैंने कैसे बात करनी है, और Strike मैं where it आपको नहीं बता matters, my सकता. friend. Strike where it matters. मैं तो मैडम, मैं आपको नहीं बता सकता आपने क्या बात करनी है, और आप भी मुझे नहीं बता सकती. मैं नहीं, बट एक आपको आपके जो कॉन्टेक्स्ट. सवाल है वो जवाब से लंबे हो जाते हैं यार, वो थोड़ा और सा मैडम, इरिटेटिंग हो इतना जाता है सा ना मैंने आपको अंडरस्टैंड एक करना। चीज क्लैरिफाई किया, आप उसमें जाके उस सारे नहीं, आप प्रोसेस में चले. क्लैरिफाई नहीं कर रहे, आप अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं पूरा का पूरा कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप शायद। दरअसल आप पता है क्या है, आप थोड़ी सी वो उसमें आ गई हैं शायद, जैसे कि आप 500% ठीक हैं और अगले बंदे को वही करना चाहिए जो आप सोचती हैं. नहीं, नहीं, दुनिया बिल्कुल भी ऐसे नहीं नहीं। सोचती मैं जिस तरह वही आप चीज़ें कह सोचती रही हैं. हूँ जो आप अपने ही फेलो और पाकिस्तानीज़ दुनिया, को बिठा के कहते हैं, बट जब मैं कहूँगी तो तकलीफ होती है, आई कैन अंडरस्टैंड नहीं दैट। नहीं नहीं, आप जो मर्जी कहें, दैट इज योर राइट. आई एम गिविंग माय पर्सपेक्टिव. आप जो Then don't मर्जी cut me कहें. off. When I talk, don't cut me off. Be a little respectful. मैं आप जो मर्जी कहें, दैट इज योर अल्टीमेट राइट. आप जो मर्जी I'm कहें. not मैं, saying anything. All I'm saying is if you don't respect my opinion, don't call me. Is it too भाई difficult to आपने नहीं आना, understand? आप ना आए, आपको कौन रोक Of सकता है. course यार, मैंने आप आपको आप कुछ मुझे जबरदस्ती बुलाते थोड़ा तो मैं बिठाया आती हूँ हुआ ना है. यार, अगर आप मेरे ओपिनियन का आपको एक कोई आपको उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डोंट कॉल मी, डोंट कट मी ऑफ मैडम व्हाइल अगर, टॉकिंग इज ऑल आई एम लिसन सेइंग। लिसन, दो चीजें मैडम. देखिए, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, वन थिंग. सेकंड, श्योर, and you know this, I respect you a lot. Second point is, whatever you say, I don't subscribe that 100%. One thing, श्योर। I have all right to disagree with you, and you have all right to say whatever you want to say. But अगर मैंने एक चीज explain की है, elaborate All की I'm है saying is from let my, me complete, Kamar. All I'm saying is you let me complete and you मैडम मैं disagree. तो अपनी बात कर रहा हूँ, आपने बीच में जो टोकना आप शुरू मुझे कर दिया 2 तो तुम. मिनट का जवाब देने दे रहे हैं, उसमें आप 10 मिनट का अपना मेरा आपका ख्याल है कि तर्जिया ये कर रहे हैं। दिस How इज does this work, my friend? मेरा How does this मेरा work? मेरा ख्याल है कि ये दिस इज नॉट द वे. वी डोंट टॉक दिस वे. आपको भी पता है हमारी बहुत अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छे सवाल होते हैं, अच्छे जवाब होते हैं. बट दिस टाइम आपने ये, यू हैव जस्ट डन दिस इज योर वे टू डू दिस. आई वांट, No, I told you even off camera that, at least let me complete my points because every time मैं I appear with you, people who follow me, they have a आई problem एम with that नॉट because लुकिंग they एट feel पीपल. that you have a misogynistic streak in you where you do not let the woman guest complete.
I have told you this नहीं 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 नहीं। also. आप देखें, आप उसको Maybe. खवातीन के पराये में लेके जा रही हैं, Of मिसोजिनिस्ट, course, I प्लीज mean it's a प्लीज। little uncool, right? मेरा You ख्याल है कि tend to मैडम, stop आई थिंक women a lot, you know. You don't do ना that to men ना actually. मैं चाहता था ऐसा इंटरव्यू हो और ना आप चाहती थी, लेकिन अगर आप इसको इस पराये में लेके जा रही हैं कि मिसोजिनिस्ट एंड ऑल दैट, कभी भी ऐसे नहीं हो। आप सारे इंटरव्यू अपने उठा के देख ले जो मेरे साथ हैं, दे हैव बीन वंडरफुल, Always एक्सीलेंट happens. इंटरव्यूज। Just that I don't lose it all the time, but it always happens, Kamar. मैडम, आप आई थिंक अपना टेम्पर लूज कर गई हैं। आप, इट्स नॉट दैट वे। आप, यू हैव बीन वेरी डियर फ्रेंड एंड यू, आप बहुत ऑनरेबल है मेरे लिए। लेकिन ये जिस अंदाज से आप बात कर रही हैं कि आप क्यों जवाब दे रहे हैं, आपका पॉइंट ये है कि आप जवाब भी क्यों दे रहे हैं। मैं तो आई एम जस्ट गिविंग यू माय पर्सपेक्टिव, दैट इज, आई थिंक एवरीबॉडी हैज ए राइट। और I आप think इस 10, I've explained my position. I rest my case. You can just go on. जी जी I've बिल्कुल। already explained my ने, position as to what मैंने भी worries me. एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स नॉट द केस। Sure. एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आई हैव वन मोर क्वेश्चन, बट आई वुड जस्ट वांट टू टेल, you have always been on an honorable guest for me, even now, even in future, if you would love to come. Secondly, whatever you say, you are absolutely have a right to say, because ये आपका एक perspective है, and you just can't force me कि मैं ये ना कहूँ। आप जो मर्जी कहें, ये आपका हक है, आपको कहना चाहिए। लेकिन आप किसी को ये ना कहें कि तुम जवाब भी क्यों दे रहे हो, तुम बोलते भी क्यों हो। दिस कैन नॉट हैपन, मेरा ख्याल है एक चीज। बट आई थिंक, आई मीन, वी शुड कंक्लूड दिस हियर। बट वन Yeah, लास्ट sure. क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट हैज गॉन आउट ऑफ, कंप्लीटली आउट ऑफ टेस्ट चला गया ये सारी बात। बट एनी, नो प्रॉब्लम, होता है डिस्कशंस में। बट ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज that one should always be respectful with the guests. You are a very respectful person for me. लेकिन हम जो है वो एक और जो है वो सवाल करते हैं, सो दैट वो जस्ट एंड दिस डिस्कशन। Sure. तो जो मैं सवाल कर रहा था, जो जो वन ऑफ द क्वेश्चंस विच आई, मैंने आपको बताया भी था, दैट वी शुड हैव अ जॉइंट मैकेनिज्म। कि जॉइंट मैकेनिज्म का क्या फॉर्मूला हो सकता है? एक तो था जी कि पाकिस्तान को इंडिया ने बुलाया उधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की उस पे, लेकिन इट डिडंट एंड इन अ गुड वे। पाकिस्तान ने किया, दैट वाज पाकिस्तान फॉल्ट। मुझे समझ है उसकी, पाकिस्तान को जाना चाहिए था। और क्या समझती हैं कि is there any space where Pakistan and India can work for counter terrorism? Because challenges एक जैसे हैं। When it comes to Afghanistan, there are groups जो टारगेट कर सकते हैं, पाकिस्तान को कर रहे हैं, इंडिया को भी कर सकते हैं, और भी खित्ते के ममालिक को कर सकते हैं। So what is India's way on that? Right now, we don't see a direct threat, and I'm sure India would not want to collaborate with Pakistan on threats which are staring Pakistan in its face right now. You will have to sort your own act, and you will have to put your own act together right now. Um, आप जैसे कह रहे थे कि हम अमरुल्ला साले को भी फॉलो कर रहे थे, वो किन किन के साथ उठते बैठते थे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दुश्मन का कोई दोस्त है तो वो आपका दुश्मन ही हो। It is not imperative to that, okay? अमरुल्ला साले वाज नॉट एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान। मुझे लगा था आप लोगों को अभी तक ये चीज समझ में आ गई होगी कि आफ्टर दीज पीपल, the Taliban replaced the erstwhile Afghan government. The terror attacks in Pakistan have gone up by 51%. So by this time, you should know that Amrullah Saleh, even if he was an enemy of Pakistan, he was not as big of an enemy as the Taliban are. तो आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी कोलैबोरेशन हो सकती है टेररिज्म को टैकल करने में, तो वो उन्हीं थ्रेट्स पे हो सकती हैं जो इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं। उस पे आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज रेडी टू स्पीक टू इंडिया, बट अदरवाइज अगर जो भी आपको जैसे अभी जो भी मसले पेश आ रहे हैं टीटीपी की तरफ से, या फिर जिनका एक पोटेंशियल है इन ग्रुप्स का कि आगे चल के एक ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, जैसे भी यूएस ने भी एक स्टेटमेंट दी है दैट वी स्टैंड रेडी टू हेल्प पाकिस्तान टेक ऑन द टीटीपी अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं तो होता ही है, कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं सीआईए और आरएनएडब्ल्यू के बीच में भी होगी। वो मिलजुल के इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ तो जाती ही है। And India is seen as a very important player when it comes to tackling the terror threat. आपको पता होगा जो Five Eyes Alliance भी है, उसके लिए भी there are many US lawmakers who have been batting for India, Japan, and I think Germany
and there's one more country, जिसके लिए साउथ कोरिया, जिसके लिए they've been batting कि इनको जो है इसको extend किया जाए Five Eyes Alliance को, इसको Nine Eyes Alliance बनाया जाए, और इन countries को जहाँ पे decent democracies है functioning, इनको उसमें add किया जाए. तो we will try and collaborate with the whole of world which we can trust. But with the Pakistanis, I don't see in the near future कि हमारी कोई direct collaboration होगी, because अभी जो ये terror groups हैं, the truth be told, they have no entire India agenda as such, right? So we will cross the bridge when the bridge comes. अगर हमें तो आप कभी लग समझती गया, हैं कि कोई एंटी इंडिया ग्रुप होंगे तो तब आप कोलैबोरेट ऑफ करेंगे या कोर्स आई ज्यादा? थिंक हर कोई ऐसे करता है. इवन जो अमेरिकन की स्टेटमेंट है वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर ये जो टीटीपी वगैरह है, इनके ऑफ कोर्स दे हैव लिंक्स विद अल कायदा. वो तो अफगान तालिबान को भी कहते हैं कि भाई ये तो हमारे एमिर्स हैं, वी लुक अप टू देम, दे आर आवर लीडर्स. इन्होंने तो वो करके दिखाया जो हमने करना है, राइट? तो उनके आपस में लिंक्स हैं. तो अमेरिका भी अगर आपकी मदद करेगा तो वो क्यों करेगा? वो आपके साथ तभी जाके आपके साथ वो कॉपरेट करेंगे जब उनको लगेगा कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देम. बट अगर इफ यू लिसन टू अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट, यू विल नो दैट वो तो बड़ी क्लियरली ये बात अभी कह रहे हैं कि जी अभी हमारे लिए जो मेन थ्रेट है वो चाइना है, और अफगानिस्तान में तो अभी चाइना के भी कोई इतने इनरोड्स नहीं है कि हम अफगानिस्तान पे इतना ध्यान दें. सो आई थिंक राइट नाउ इट्स योर ओन मेस, यू हैव टू डील विद इट वेदर यू लाइक इट और नॉट. जब किसी दूसरी कंट्री को लगेगा कि उनके ऊपर कोई डायरेक्ट थ्रेट है, दे विल कोलैबोरेट विद यू. बट अगेन मुझे लगता है कि इंडिया will never really trust Pakistan when it comes to safeguarding its own national interests, because it doesn't make sense. बिल्कुल सही कह रही हैं. ऑब्वियसली एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, और द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपका वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है देन ऑब्वियसली करते हैं. लेकिन मैं समझता हूँ कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड नेशंस कोलैबोरेट, द वर्क टुगेदर इन फाइटिंग दिस menace of terrorism, and I think मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, India and Pakistan, they should work together along with the other countries, and Pakistan should participate even if somewhere India is leading any initiative like this NSS को बुलाना and all that, because इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. ज़्यादा कुछ जी कहना चाह रही हैं आप? आई थिंक आप थोड़ा सा ये, आप बिलावल भुट्टो साहब को मैंने सुना आप रिसेंटली मिले भी थे, आप शायद उनको आपको ये बताना चाहिए कि यू नो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग कोऑपरेशन विद द कंट्री ऑन सो मेनी फ्रंट्स, एंड व्हेन यू आर योरसेल्फ इन लाइक deep, you know, SHIT, then you should probably not indulge in name calling and, you know, launching personal attacks. आपको थोड़ा सा अपने जो narrative को थोड़ा सा moderate करना पड़ता है. You have to get off your high horses and make things happen. This is not how it works. मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी लीडरशिप व्हेन इट कम्स टू इंडिया, क्योंकि वो जब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को सुनेगा कि वो पाकिस्तान के बारे में इज कॉलिंग नेमिंग एंड शेमिंग एंड ऑल डूइंग दैट, तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी रिस्पॉन्ड ही करेगा. इट डजंट He मैटर did not कि वो personally क्या. attack anybody. But I think I just leave it to Bilawal Bhutto. What does he say? Sure. If he attacks Prime Minister Modi directly, that is his prerogative, not mine. But he has all right to say whatever he wants to say. But obviously, the foreign ministers should talk in a more diplomatic way. इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है. उनको अच्छे अंदाज से करनी चाहिए. लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे foreign ministers फिर अपनी उनकी ऑडियंस होती है जिससे वो प्ले कर रहे होते हैं. Same happens in India. Same happens in America and Pakistan as well. Anyhow, thank you very much, Sonam Mahajan Sahiba. So the purpose of the talk, today's talk, was obviously to know that how India is looking all these rising threats. And at the end of the discussion, I will also once again say, अगर आप कुछ कह रही हैं, you have all the right to say whatever you want to say. At times, if I felt कि मुझे एक छोटी सी बात को क्लैरिफाई करना चाहिए, and I have the right. And हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये समझना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो 5000% राइट है. हमें वो या जो आप कह रही हैं वो 5000% राइट है. वी ऑल हैव आवर ओन, जिसे कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग होती है इश्यूज़ की, एंड वी शुड सब्सक्राइब टू दैट, एंड वी शुडंट. मेरी पर्सनल ये है, आई नेवर स्टॉप पर्सन कि आप जो मर्जी कहना कहें, बिकॉज यू हैव ऑल राइट. ये कोई वो तो नहीं है. वी शुड हैव गुड फैक्ट्स. हमें अच्छे फैक्ट्स की समझ आनी चाहिए, अच्छे एनालिसिस की समझ आनी चाहिए, एंड वी शुड हैव ऑल दी ओपिनियंस. हमें अपनी ओपिनियंस होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी वो जिसे कहते हैं ना, ये फील नहीं करना चाहिए कि कोई आपके ऊपर टारगेट कर रहा है ना. मेरे पे No, अगर I didn't say that. I mean, you are still kind of beating around the bush. I don't understand. Well, I just told you to let me complete. I did not say you can't disagree with me or I can't disagree with you. And I think we have had this conversation off record also. I mean, please do not take such high moral ground. I mean, this is not how it works with me, at least.
मैं ये नहीं कह रहा हाई मॉरल ग्राउंड की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मैं तो अपनी एक I बात didn't कह रहा stop था। you from disagreeing, Kamar. Just understand कि आपने किसी को बुलाया है तो let them complete. I mean, sure आप नहीं पढ़ते होंगे comment section, but आपको शायद कभी देखना चाहिए कि आपके questions थोड़े से लंबे हो जाते हैं, which gets a little, you know, वो थोड़ा खिचड़ी बन जाती है. तो मेरा क्वेश्चन नहीं था वो, जी, मेरा एक रिप्लाई था, तो उसको रिप्लाई समझा जाए ना कि क्वेश्चन नहीं, वो समझा कुछ जाए। 6 सारा मिनट के टाइम लिए मैं क्वेश्चन चला पे था, तो करता आई वाज वंडरिंग कि यार मैं गेस्ट हूँ या फिर ये मेरा शो चल रहा है, हूँ। और मैडम, आई एम स्टार्टिंग माय चैनल वेरी सून, तो मैं आपको बुलाऊंगी एंड देन आई वुड वी लव टू विल कम। सी यू मैंने नो हाउ देखें, आप डिस्कशन इज गोइंग वी स्पोक ऑन दैट, और आपने कहा था एंड आई गेव यू, जरूर शुरू करें। आई विल बी पार्ट ऑफ टू. दैट व्हेन एवर यू विल आस्क मी। You are going to be my first guest, you know. थैंक यू वेरी मच, आई विल बी वेरी मच ऑनर्ड। I एंड hope अब आप आएंगे, अब आप नाराज नहीं हो जाएंगे. I पहली hope आप बात, आ जाएंगे. ये जो डिस्कशन है ये एज इट इज अपलोड होगी, वन। सेकंड, जी. अब जब भी बुलाएंगी मैं आऊंगा, बिकॉज मेरा बहुत बड़ा You दिल are है। my first guest. I am telling you. और बिल्कुल एंड आई आपको. हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू एंड यू नो दिस वेरी मच, ठीक है। एंड फॉर एवरी माय गेस्ट ऑफ माइन, पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से कैसे लेता हूँ, पूरी दुनिया से लेता हूँ, अमेरिका से भी Oh, of course. लेता हूँ। So I have all respect for every guest, because it's not about having a show. It's about letting people know, those who are with us, those who follow us, those who subscribe us. Uh, and at the end of the day, guest सबसे important होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा गेस्ट हमेशा राइट होता है, बिकॉज जरूरी नहीं है ट्रूथ उसके पास भी हो, लेकिन we should have a freedom at the Nobody's right. Look. end. Yes, Truth is agree. what? It's like a bunch of perspectives, right? You will have your Yes, own perspective. I will have my own. I think when I host you, you would know what I'm exactly trying to say. I mean, if I invite somebody, I would rather have them let them have their say and then lodge my disagreement. I was talking about something else. You've taken it in a completely different spirit. But anyway, let's conclude now. And I think I'm just going to walk the talk and tell you in my actions as to what I was trying to communicate. Till then, take care of yourself. And when I thank invite you. you, please do come. And you will जी also जी। have to kind of promote my channel. That goes without Why, saying. और So, मैं yeah. So, इसी चैनल के ऊपर, on this channel I will promote your channel, on this channel I will share the link of your channel, और मेरे करने की जरूरत ही नहीं है, and everybody I'm knows you। not paying you. That's for free, right? नहीं 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 नहीं, इसमें आजकल पेमेंट आप वाली तो, डॉलर में कमाते होंगे तो you who doesn't earn in this world? इस दुनिया में कौन नहीं कमाता, सारे कमाते हैं, and कौन कमाए बगैर जिंदा है? सब कमाने से sure, जिंदा but है। दोस्तों से कमाना जरूरी नहीं है ना. You नहीं नहीं should. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये, आप उधर चली गई कमाने की साइड पे चली गई, मैं तो वो बात भी नहीं कर रहा। बट मैं जो कह रहा था कि ऑब्वियसली जब आप चैनल चलाएंगी, मैंने आपसे बात हुई थी, मैंने कहा जरूर करें आप। यू हैव अ Of बिग course. वॉइस, यू हैव अ बिग नेम, यू आर रिस्पेक्टेड, यू आर लव्ड बाय पीपल, सो आपको जरूर इसको करना चाहिए। दैट विल बी अ वंडरफुल, जिसे कहते हैं ना, एडिशन। So all the best for that, and this discussion will upload as it is. Thank you very much. So, thank you. Bye.